अब बातचीत करेंगे वंडरला हॉलिडेज के मैनेजमेंट से। FY23 यानी बीते वित्त वर्ष में कंपनी का फुटफॉल प्री कोविड लेवल से ऊपर चला गया है। चौथी तिमाही में कंपनी ने काफ़ी शानदार नतीजे पेश किए। आमदनी 70% यानी रेवेन्यू 70% बढ़े हैं और मुनाफा 4x 4 गुना हो गया है। एबिटा भी डबल हुआ है और मार्जिन 43% के कमांड किए हैं। सीक्वेंसली हालांकि देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर से थोड़ा सा कम है, लेकिन YOY ज़बरदस्त ग्रोथ है। आरपू इसमें भी होता है। जनरली हम लोग टेलीकॉम में देखेंगे, यहाँ पे भी चूंकि फुटफॉल के हिसाब से तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र के हिसाब से 1263 रुपये तक ये पहुंच गया है। आगे के प्लान्स और इस बिजनेस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण चित्तिलापल्ली जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। Q4 आपके लिए बहुत अच्छा रहा और प्री कोविड लेवल से फुटफॉल ऊपर चले गए हैं और आरपू भी इम्प्रूव होते हुए दिखा, बेटर होते हुए दिखा है। इस वक्त चूंकि इसमें एक थोड़ा सा एक सिक्लिकल इम्पैक्ट होता है, सीजन का भी इम्पैक्ट होता है, बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत बारिश हो रही है। इस समय जब हम बात कर रहे हैं इस क्वार्टर में यानी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, किस तरीके के फुटफॉल्स हैं और क्या बिजनेस दिख रहा है? So thank you so much for having me on the show. Like you said, last year was a phenomenal year for the company, and we've grown by almost 60% in terms of revenue and almost doubled our profitability. This is also because we had the phenomenon of revenge travel post-COVID. So this last year was the first year when we had the park open every day of the year without the scare of COVID. So naturally, we've seen a huge growth in footfall. This year, we are looking at it as a consolidation year. We are not seeing big growth in footfalls, but we are not expecting that also because it's hard to grow on top of a 60% growth. We are seeing marginal growth in footfalls, but good growth in ARPU. So this year, we are using it to improve our ARPU and improve our revenues. Okay. कंपनी के 3 पार्क ऑपरेशनल है, कोच्चि, बेंगलुरु और हैदराबाद। एक भुवनेश्वर में बनने वाला है। अरुण, मुझे ये जानना है कि आपके मान लीजिए एक का उदाहरण लेते हैं, बेंगलुरु का लेगा, कितनी कैपेसिटी है पर डे? आप कितने गेस्ट को एंटरटेन कर सकते हैं एक दिन में? So Bangalore Park has a legally limited at 12,000 visitors a day. Although I would say the realistic limit is closer to like 8 to 9,000 because beyond 8 to 9,000 visitors, the experience of our guests suffers. So we typically like to have about maximum 8 to 9,000 visitors in our parks. अभी इस समय कितने लोग आ रहे हैं रोज? 8 to 9,000 की अगर मैं मान लूँ लीगली और कंफर्टेबल, तो कितने लोग अभी आ रहे हैं रोज? See, in our peak seasons, we are averaging about 4 to 5,000 visitors. So very close to the 7 or 8,000. So because some days it will go above 8,000, goes to about 10,000 or 12,000 also some days. But average is 4,000. 4 to 5,000. 4 to 5,000 एवरेज और 8,000 लोग डेली आ सकते हैं एक पार्क में। सोचिए इतना बड़ा, और वंडरला भारत का सबसे बड़ा जो एम्यूजमेंट पार्क है उनको रन करते हैं। देश भर में करीब 170 पार्क होंगे, इनके पास 3 है, लेकिन साइज इज मैसिव, बहुत बड़े बड़े पार्क हैं इनके पास। भुवनेश्वर कब ऑपरेशनल हो जाएगा और उसकी कैपेसिटी क्या होगी पर डे की? See, Bhubaneswar will be an asset-light model for us. It's the first time we are doing a park like this. So a typical Wonderla park, roughly about 400 to 500 crore investment. That's what we do. But Bhubaneswar is different. We are doing maximum investment there of only 150 crores. But we are expecting the footfalls we can handle up to about 4,000, the maximum 4,000 to 5,000. And when will it be operational? We'll be operational FY25. FY25. अरुण, एक चीज़ आप लोगों ने जो एसेट लाइट वाली बात की, मैं इसको थोड़ा समझना चाहता हूँ। आपका ये मानना है या कंपनी की फिलॉसफी ये है कि ज़मीन खरीद के बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि ज़मीन बहुत महंगी है Correct. और मिलती नहीं है। अब जब आपने हैदराबाद वाला बनाया तो उसमें 40-50% की लैंड कॉस्ट हो गई थी। तो ये जो एसेट लाइट मॉडल आप लेके जा रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको लीज पे लैंड मिल जाए, तो आपने और कहाँ ये प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के साथ रखा है, और क्या सिर्फ मेट्रो टारगेट कर रहे हैं या छोटे शहरों में भी? The amusement parks are world over. It's a very high capex investment kind of model, and it doesn't work in a place like India because our spending power is much lower. So that's why we are looking at asset-light models.
Like you rightly said, the cost of land in India is very high and very prohibitive for us to do a viable project. So that's why we are looking at these alternate methods. So far, we've seen a lot of interest from state governments because amusement parks, all said and done, creates huge amount of direct and indirect employment for a large number of people. For example, in Bangalore, we have almost 1,000 people directly employed and maybe another 2,000 directly employed. So that is very attractive to a lot of state governments, and we are a zero discharge facility, no pollution. In that sense, we are it's a very good industry to have in large cities. Our plan is to be in all large tier 1 and tier 2 cities. So, for example, any city which has more than a 2 to 3 million population, we can do this project. तो आपकी नॉर्थ में किसी स्टेट में बात हो रही चूंकि बहुत पोटेंशियल है वहाँ पे? We are talking to the Punjab government to do a project in outside Chandigarh in Mohali area. We are also talking to Uttar Pradesh government, although we are not, we want to do something in the Noida area. So these are the two projects that we are talking about. Okay. तो उत्तर प्रदेश वालों के लिए नोएडा में बातचीत हो रही है और पंजाब में मोहाली चंडीगढ़ के आसपास वहाँ पे 3 सिटी का फॉर्मूला चलता है। अरुण, एक चीज़ बताइए, आपकी जो इंडस्ट्री है, जो ये पार्क है, इसमें फुल कैपेसिटी में यानी 8,000 लोग रोज आएँ, ये एक्सपेक्ट करना थोड़ा ज़्यादा होता है ना? तो आपके पास कैपेसिटी हमेशा एडिशन रहेगी। तो दूसरा तरीका ये बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्क बनाएं अलग अलग जगहों पे, और उसके लिए आपने सोचा कि एसेट लाइट मॉडल ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पैसे बहुत खर्च नहीं करने हैं। अब चूंकि आपका 8,000, 10,000, 12,000 कैपेसिटी का पार्क है और उसमें लोग आ रहे हैं 2,500-3,000 पर डे, तो ये जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं इसको आप कैसे मैनेज करें? क्या नॉन पार्क रेवेन्यू कुछ आप सोच रहे हैं, कैसे इसको आप करेंगे? क्योंकि एक्सपेंसेस तो उतने ही होंगे आपके। See, like you rightly said, we have 2 types of revenue, which is ticket revenue and non-ticket revenue. Non-ticket revenue includes, your F&B sales, your merchandise sales, sale of costumes, all these other things, and also a resort. So we are planning to expand more into that area. Right now, about 25% of our revenues come from non-ticket revenues. We want to extend that to about 30%. The global standard is maybe 60-40 for the large parks like your Disney's of the world. But we are more of a regional player. And for us, I think a 70-30 ratio is pretty good. We do expect ticket revenue to be a higher contributor. But having said that, non-ticket revenue is showing most promising growth because people are willing to spend more on food and merchandise and things like that. As the brand becomes more popular, people will spend more on these areas. So that's what we are focusing on. And we hope to get to that 70-30 kind of number in the next 2 to 3 years. अरुण, अभी 25-30% आपका नॉन टिकट रेवेन्यू है और 70-75% टिकट रेवेन्यू है। ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं, थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन नॉन टिकट में बहुत पोटेंशियल है। क्या आप ये सोच रहे हैं, चूँकि आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिटी में है या सिटी से एडजेसेंट है और बहुत ही अप मार्केट इलाके में है और जगह आपके पास बहुत सारी जिसको आप ऑलरेडी एक लेवल तक डेवलप कर चुके हैं, क्या आप लोग ये भी सोच रहे हैं, अदर देन दैट रिजॉर्ट, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि उस पार्क के अंदर कुछ आप ऐसा भी बनाएं, होटल बना सकते हैं आप, आजकल बहुत डिमांड चल रही है टूरिज्म की, तो विद इन पार्क चूँकि लैंड आपके पास है, आप एक होटल बना सकते हैं, नॉन टिकट रेवेन्यू जनरेट करें, क्योंकि ये मुझे लगता है थोड़ा आपको आगे चलते हुए ऑपरेशनल एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। No, I don't see. We already have a resort in Bangalore, and we want to expand that. So we are running at almost full capacity during the peak season. So that tells us we have reached capacity. We need to expand the resort. So we're doing that. In the other markets where we don't have the resort, we want to build resort. So because we feel that as the park becomes popular and more people come to the park, we need to build a resort because as the park becomes too big for people to complete in one day, then they want to stay for the second day, right? So that is the way we want to think about it. So we're obviously looking at expanding in this area also. In, for example, Hyderabad and Cochin, where we have older parks, especially Cochin is our oldest park. The reason why we have not done it so far is because we felt that the ARPU or the ARR for the resort doesn't make sense for us in terms of investment. But now that is changing. We're able to get much higher ARRs in our resort.
in Bangalore. So that gives us a lot of confidence, and it's also running at much higher capacity now. So we are looking at expanding into the resort segment as well. ओके बहुत जो बड़े देश हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पार्क हैं वहाँ पे अपने लीजर का लोग 10-11% रफली खर्च करते हैं. इंडिया में अभी सिर्फ 3% है. पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है इसमें, राइट. और एक सिक्लिकल फेवर है इसमें कि छुट्टियाँ होंगी तो लोग जाएंगे, क्योंकि ये आपके जैसे बड़े अम्यूजमेंट पार्क में डे लॉन्ग इवेंट एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी आपको. तो आप इसको कैसे पुश कर रहे हैं कि लोग वंडरला के उसमें आए? कोई टाई अप्स करते हैं आप किसी के साथ? कैसे गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट के साथ, कंपनीज कॉर्पोरेट के साथ, जिससे कि लोग आपके पार्क में आए? क्योंकि आपका एक तो स्टेशनरी है ना कि जिसको जाना है वंडरला में उसको हैदराबाद या बेंगलुरु ही जाना पड़ेगा. तो आपकी एक तो मार्केट बहुत लिमिटेड हो गई उस जगह की. See, not really. I feel that the amusement park industry is actually very underrepresented. Like we are a country of 1.3 billion people, largest country in the world, and we have 170 parks, out of which majority are very small parks. Even my park, in our parks, which are supposedly large, is compared to the other countries, our parks are still very small. So that shows that the industry is still in a very nascent stage in India. People going out to an amusement park is a new thing for Indians. So, that is why I think the industry is taking its time to grow. But I think I can see the growth already happening because people now prioritize day outings over large vacations, expensive vacations. They want to do smaller vacations within the maybe 100, 200 kilometer range instead of going to out of station for a longer, more expensive kind of vacation. So I think these kind of avenues will become more and more popular. And also the whole Instagram and the social media culture means people want to show off their, whatever they do for their holidays and make sure that people see it and they want to do that. So that all these things help us in this industry. But having said that, India remains a difficult market in that sense because, like you said, land acquisition is hard, getting permissions, everything has its own issues. So I think it will be, and it's a brick and mortar industry, and those industries do take time in a place like India to build. So it will take time, but I think it will grow. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैंने पहले कहा कि इससे बड़े पार्क किसी के पास है नहीं. आपका तो बहुत मैसिव प्रॉपर्टीज है, बहुत ही बड़े पार्क है. इवन नॉर्थ में कहीं भी जाइए बहुत छोटे छोटे पार्क हैं, ओरिजिनल प्लेयर्स कर रहे हैं, उनके पास एक्टिविटीज़ भी बहुत लिमिटेड है. आपका तो बहुत बड़ा है. बट एक ही मुझे कंसर्न जो समझना था आपसे कि चूंकि जो लोग बेंगलुरु में रहते हैं या उसके इन अराउंड 100-150 किलोमीटर रहते वही जाएंगे. अब मुंबई से मेरा मन भी करेगा तो शायद मैं उतना एक्साइटेड नहीं होगा. तो इसलिए आपके सामने एक मजबूरी बन जाएगी कि आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा. भले ही वो फुली ऑपरेशनल ना हो, आपको हर जगह जा जाके एक पार्क खोलना पड़ेगा, राइट? यही एक ग्रोथ का तरीका दिखता है मेरे को. Yeah, so we do feel that India, with all its infrastructure problems, and compared to any other large country, our infrastructure is very poor, and the number of roads that we have or those kind of things are very less in India compared to other countries. So we do feel that it makes more sense for us to be have a regional focus. We can't expect, like you rightly said, from somebody from Bombay to come to Bangalore to our park. It doesn't make that much sense. We will have to go to all the larger cities, and so that's the plan, and I think that's a good strategy. And the same thing you can see in other large countries also, wherever there are large populations with good spending power, the amusement park industry has grown. So I think there is definitely scope for the industry to grow in India as well. People are spending more and more time on technology, things like that. So avenues for day outing in a 1 hour drive from a city, those avenues are not there. Too many avenues are not there. So I think we can definitely be one of those. ओके. तो ये एक बहुत अच्छी बात बताई कि एसेट लाइट मॉडल जहाँ पे कम पैसे खर्च हों और एक्सपेंड करेंगे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग शहरों में, और बहुत बड़े शहरों के बजाय नियर बाई के छोटे शहरों में जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके. अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आवाज़ में और इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए. वंडरला हॉलीडेज स्टॉक ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, बहुत तेज़ी से चला है. कोविड के दौरान 2 साल वॉश आउट थे, लेकिन उसके बाद से काफ़ी तेज़ी इस पर देखने को मिली है. ये देखिए करीब 130% का रिटर्न पिछले 12 महीने में वंडरला ने दिया है. 555 पे समय ट्रेड कर रहा है. छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट की बातचीत.